Friends, hope you are all well. We all understand that education and learning would be altogether different in the post-corona world. તમે મારા આગળના વિડીયો સાંભળ્યા જ હશે. નંબર સિરીઝ, તમારું બેઝિક નંબર્સ માઇન્ડ પર કેટલું એક્ટિવ છે. તમે વોકેબ્યુલરીના વિડીયો સાંભળ્યા હશે. નાના નાના વર્ડ્સ હોય, સિમ્પલ વર્ડ્સ હોય, ડે ટુ ડેમાં કેલેન્ડર. પણ ધ્યાનથી જોઈએ તો આપણે રોજ ખોટા સ્પેલિંગનો યુઝ કરતા હોઈએ. તો આવા વિડીયો તમે મારા જોયા હશે, ના જોયા હોય તો જોતા રહેજો. વોકેબ્યુલરી બિલ્ડિંગ છે, રિઝનિંગના વિડીયો છે. આજે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ટેલિજન્સ. બહુ ભારે શબ્દ લાગે છે ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ટેલિજન્સ, પણ તમે અંદર જઈને જુઓ ને તો એ આપણે છેલ્લા 10-15 વર્ષમાં ભણ્યા એ જ છે. આપણે ભવિષ્યમાં જે પણ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપવાની હોય, પ્લેસમેન્ટ ટેસ્ટ આપવાની હોય, ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ્સ આપવાની હોય, તો ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ ઇન્ડિસ્પેન્સિબલ પાર્ટ. તો એની તૈયારી તમારે કરવી જ જોઈએ. ક્લાસીસ જોઈન કરો કે ના કરો, પણ જ્યારે પણ આપણે ફ્રી ટાઈમ મળે ત્યારે તમારો એક્સેલન્ટ કમાન્ડ તમે મેળવી લો બેઝિક નંબર્સ ઉપર. જ્યારે પણ કોઈ પણ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ હોય, ઇવન આઈઆઈએમ્સ, તમારા બેઝિક, તમારા રૂટ્સ જો સ્ટ્રોંગ હશે, તમે એને નહીં ભૂલ્યા હો તો તમને ક્યાંય વાંધો નહીં. હવે આજે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ બેઝિક્સથી, એકદમ નંબર સિસ્ટમથી. બેઝિક વર્ડ્સ. ઘણી વખત કોઈનું આખું એજ્યુકેશન ગુજરાતી મીડિયમમાં થયું હોય કે બીજા કોઈ મીડિયમમાં થયું હોય, અને મીડિયમના કારણે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય. નાનો શબ્દ હોય, કોઈ સાંભળ્યો ના હોય, કારણ કે મીડિયમ્સના કારણે પ્રોબ્લેમ હોય. તો એ બધી ક્લેરિટી લેવી ખૂબ જરૂરી છે. આઈ એમ શ્યોર તમે બોર નહીં થાવ, એટલે હું બહુ લાંબા વિડીયો નહીં કરું. સ્ટે કનેક્ટેડ, તમને ખૂબ મજા આવશે. આપણે બેઝિકથી શરૂઆત કરીએ. વોટ ઇઝ ઇવન નંબર? નંબર્સની વાત કરીએ. વોટ ઇઝ ઇવન? તમને ખબર હશે, બેકી સંખ્યાઓ આપણે કહીએ. નંબર્સ એન્ડિંગ વિથ 0, 2, 4, 6 or 8 આર ઓલ ઇવન, એન્ડ નંબર્સ એન્ડિંગ વિથ 1, 3, 5, 7, 9 આર ઓલ ઓડ નંબર્સ. ધીસ ઇઝ વેરી બેઝિક, ઇવન એન્ડ ઓડ. આપણે બાયફર્કેશનની વાત કરીએ કે નંબર્સની કેટેગરી શું હોઈ શકે. આપણે બેઝિક નંબર્સ બોલીએ છીએ, બેઝિક ડિજિટ્સ છે આપણા. આખા મેથેમેટિકલ વર્લ્ડમાં જાઓ, ધેર ઇઝ ટોટલ 10 આઇટમ્સ 0 to 9. આ સિવાય કંઈ તમને નવું નહીં મળે. 0 to 9 એટલે ટોટલ 10 આઇટમ્સ. આમાં તમને આનાથી વધારે નવી કોઈ નંબર ડિજિટ નહીં દેખાય. જે છે આનો જ ખેલ છે. Broadly, we can categorize numbers in 4 areas. Type of numbers, if I say, one is natural, second is integer, third is rational, and fourth is real. Any positive whole number is natural, 1 to n. All positive whole numbers are natural, right? Clear? Keep in mind, 0 is not natural number. There is a common mistake. People start with 0, but 0 is not natural, right? So 1 to n, all positive numbers, right? Integer, whole numbers. Simple words, whole numbers. That includes negative, positive and 0, everything. Here 0 and negative. ઉપર 1 to n હતા, એ તો અહીંયા આવે છે, પણ નેગેટિવ અને 0 વધારે એડ થયું. સો વી કેન સે every natural is integer, but every integer is not natural, right? Have a clear understanding? Every natural is integer, but every integer is not necessarily natural. Denomination. Commonly we use natural numbers, we denote by capital N. Natural number is capital N. Similarly, integer is we denote by Z. Right? Clear? Natural and integer, I am sure you are clear. N and Z. Coming to next, rational. See, this is the sequence. Every natural is integer. Now I can say every natural is rational. If I have to define, I can say that any number which can be expressed in the P by Q form, whatever denotations you want to use, you can use. Any number which can be represented in P by Q form or A by B form, these are all rational. In this simple language, 1 અને 2 આવી ગયા, -1 અને -2 આવી ગયા, પણ એની વચ્ચેની ફ્રેક્શનલ વેલ્યુ એ અહીંયા ઉપર કવર નથી થતી, પણ એ અહીંયા કવર થશે. 1 અને 2 અહીંયા કવર થયા, 2 અને 3 કવર થયા,
પણ 2.5 અહીંયા કવર નથી થતો. 2.5 અહીંયા કવર થશે. 2.5 is what? 5/2. So 5/2 is here, right? So all fractional values are covered in rational, which can be expressed in p/q form. Is it clear? And the notation which we use for rational number is q. So n, z, q. Are you clear? Every natural is definitely integer. Every integer is definitely rational. Now coming to the next is real. Every rational is real. તો અહીંયા નવું શું આવશે? જેમ કે every natural is integer, તો પોઝિટિવ કરતા નેગેટિવ અને ઝીરો નવા આવ્યા. What is added? Negative and zero. This entire set is here, but નવું શું આવ્યું? Fractional values. 3 is also rational because we can write 3 as a 3/1, right? So આ બધું જ રેશનલ છે કમ્પ્લીટ. હવે રેશનલ થી રિયલ માં જઈએ છે તો અહીં સુધીનું બધું જ આવવાનું છે ઉપર. વોટ ઇઝ ન્યુ? એવું શું આવશે? So natural, integer, rational and now real, those values which are non-terminating and recurring values, જેનો અંત જ નથી ક્યારે, continuous values છે. These are known as irrational values. Another word, remember, irrational. So irrational values will also be added in the set of real numbers, right? For example, if you do 1 divided by 3, आप करो 1 divided by 3, quotient શું આવશે? 1 divided by 3 કરો તો તમારો quotient શું આવશે? आप डेसिमल લઈને ચાલુ કરો તો 0.3, બરાબર? આનો અંત આવશે. This is continuous. 0.33333 continuous. It's never going to add. તમે 9 નું સ્ક્વેર રૂટ કરો તો તમને આન્સર 3 મળશે. તમે 2 નું સ્ક્વેર રૂટ કરો, 4 નું સ્ક્વેર રૂટ 2 થશે, પણ 2 નું સ્ક્વેર રૂટ we will learn how to find the square root exactly. What I mean to say is 2 નું square root છે, you will never get the exact answer. It is always recurring. 1.4141 continuous. It is never ending, right? So somewhere as per the requirement we'll put the full stop or we'll take the approximated value. So these all kind of recurring values would also be covered in real values. So this is a set of rational plus irrational. What should we write? Rational plus irrational. So complete natural, integer, rational. Rational means everything is covered. Rational plus, that makes the complete set of real numbers that we generally know as capital R. Okay? N, Z, Q, R. આની ઉપર પણ એક દુનિયા છે. That we say C, set of complex numbers. That is complex. શું રહી ગયું? હવે શું રહી ગયું? Negative values in square root are not considered real. એની કોઈ real value મળતી નથી. અને to simplify that we use imaginary numbers, imaginary values like I and omega. In future we'll get a chance to cover I square is -1, omega cube is 1. ક્યાંક ને ક્યાંક આવ્યું હશે. So real plus imaginary, when imaginary numbers are also considered, that is not covered in the set of real numbers. So real plus imaginary, that makes a complete set of complex numbers. I repeat, where we use imaginary numbers to simplify negative values in the square root. Square root of 2, that is covered in irrational, but square root of -2 not covered here. Square root of -2 is not covered here, right? So that is covered in the complex. So real plus imaginary, right? Is that clear? Real plus imaginary, and that complex set of complexes we denote by C. Is it all right?
So let us conclude. N, Z, Q, R and C. Irrational, be specific, which are not rational, which cannot be represented perfectly in the given form, which does not have the exact value, approximated value, non-terminating values are all rational numbers. For example, square root of 2. Another example, if I give pi. Pi સાંભળ્યું છે? You might have used pi. What is the value of pi? Pi is 22/7. हम कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं pi is 3.14 और 22/7. सो आपको क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि 22/7 तो सर a/b फॉर्म हो गया, तो ये रैशनल है. यू आर राइट, 22/7 इज रैशनल, बट pi is not exactly 22/7. For approximation and for calculation and simplification we may take 3.14 or 22/7, but this is not exactly pi. Exact pi is 3.142857 continuous, right? So pi is irrational. 22/7 is definitely rational. 3.14 is definitely rational, but pi is definitely irrational. Okay? So, ready? Are you getting? So here, n is a subset of Z, is a subset of Q, is a subset of R, is a subset of C. Right? Remember this. Natural, integer, rational, real and complex. Is it clear? Hope I satisfied you. Let us go for another terminologies. Even and odd I started with. What is prime and composite? What is prime and composite? फैक्टर सुना है? अवयव, फैक्टर. सपोज 10 है तो 10 के कितने फैक्टर्स निकलेंगे? कौन कौन से नंबर है जो 10 को डिवाइड कर सकते हैं? We all know universal statement, 1 is a factor of every number. And number itself is a factor of every number. ये दो तो होने ही होने, कोई भी नंबर. 1 and number itself are the factors of given numbers. That is universal. That means 1 is definitely a factor of 10. 10 is definitely a factor of 10. बाकी कोई नंबर है जो 10 को डिवाइड कर सकते हैं? Yes, 2 and 5. Right? So 1, 2, 5 and 10. Right? चलो 11 के कितने फैक्टर्स निकलेंगे? 1, बीच में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट 11. Numbers having exactly 2 factors, 1 and number itself. इसके अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता. Numbers having exactly 2 factors are considered prime. Right? Clear definition. Numbers having exactly 2 factors and composite. Numbers having more than 2 factors. Right? Numbers having exactly 2 factors are prime. Numbers having more than 2 factors are all composite. चाहे 12 है, 20 है, 60 है, 1000 है, 5000 है, whatever. आपको 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं बाय हार्ट होना चाहिए. ये आपको सिर्फ मैथ्स में नहीं, नंबर सीरीज में भी बहुत सारी जरूरत पड़ेगी. और कई डिविजिबिलिटी रूल का काम है. आपके माइंड में क्लैरिटी है, यस ये प्राइम है, तो आप इजीली उसको टाइम सेव कर पाओगे और फास्ट आगे बढ़ पाओगे. सो बार बार उसको याद करते रहना. इसको रटने की जरूरत नहीं. जितना ज्यादा मेमोरी में लाओगे उतना आपको फायदा होगा. राइट? So let us write prime numbers in 1 to 100. Be quick. एक बार ट्राई करो. I am giving you 1 minute, 2 minute. आप आराम से ट्राई कर लो. फटाफट अपनी नोट में लिखो, पेन पेपर पे लिखो. देखो फिर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ कितना सही होता है. ये जमाने पहले कर चुके, छोड़ के आए, भूल जाते हैं हम. बहुत बेसिक चीज है. इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता. चलो, गिविंग यू 1 minute, ट्राई.
आराम से लिखो। टेक अनदर 30 seconds। बी क्विक। जो चीज जो टाइम पे होनी चाहिए तो ही उसका इंपॉर्टेंस है। टाइम निकल जाने के बाद, घर आने के बाद एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर याद आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। यस नो करने का मौका एक ही बार मिलता है। इफ यू आर आस्क्ड 43 इज अ प्राइम, आपके माइंड में और आपके मुंह से वन टाइम जो निकला यस और नो, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई एम राइटिंग प्राइम्स इन 1 to 100। अपनी गलतियां देख लेना और बार बार रिपीट करना, ताकि जो गलतियां दिमाग में है, जो आज गलती करी आपने, वो पुरानी बीमारी है, एकदम नहीं निकल जाएगी। अभी जो मैं करा रहा हूं वो फ्रेश है। तो अगर कोई नंबर आपके दिमाग में गलत आया, फॉर एग्जांपल गलती से आपने 27 प्राइम लिख दिया है या 51 प्राइम लिख दिया है, वो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके कब से आपकी अंडरस्टैंडिंग चली आ रही है। आज तो किया नहीं, आज आपने लिख दिया। लेट अस सी, पहले मैं लिख देता हूं, देन अगेन विल टेक 1 minute। See, these are 25 primes, right? 1 मिनट भी नहीं लगी शायद। आप भी कर सकते हो प्रैक्टिस, राइट। आराम से आप देख लो। देयर आर 25 प्राइम्स, 5 5 5 5 5 25 प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिए। काफी लोगों ने पहले ही गलती करी होगी, 1 लिखा होगा। बताओ लिखा है कि नहीं? यस और पहले ही 1 लिखा होगा। क्या डेफिनेशन थी हमारी प्राइम की? नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर प्राइम। 1 के कितने फैक्टर्स निकलेंगे बताओ? सिर्फ 1। तो प्राइम की डेफिनेशन में आया नहीं, कैसे प्राइम हुआ? कंपोजिट की डेफिनेशन नंबर हैविंग एग्जैक्टली नहीं, मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट्स अ न्यूट्रल नंबर। रिमेंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट्स अ न्यूट्रल नंबर, राइट। सो 2 अगेन 2। देखना, एक ही इवन नंबर है 2, बाकी सारे ऑड नंबर्स है। बाकी सारे ऑड है, नंबर्स एंडिंग विद आइदर 1 3 5 7 और 9, क्योंकि 4 6 8 से एंड होता हुआ नंबर आएगा नहीं, उसका 2 भी तो फैक्टर होगा। सो 2 इज द ओनली प्राइम विच इज इवन, राइट। क्लियर? आंखें बंद करके भी आपको कभी भी पूछे कि 67 प्राइम है, 1 सेकंड में यस निकलना चाहिए। आंखें बंद करके कोई पूछे 91 प्राइम है, डेफिनेटली प्राइम नहीं है 91, क्योंकि 13 7 से 91 होता है। 13 and 7 आर डेफिनेटली फैक्टर्स ऑफ 91 अदर देन 1 and 91, राइट। सो बी क्लियर, दिस विल हेल्प यू इन सीरीज ऑल्सो। आगे भी जितना याद कर सकते हो वो फायदा है, बट एटलीस्ट ये तो बेसिक। क्लियर? So primes, there are 25 primes. 1 is neither prime nor composite. 2 is the only prime which is even. आगे बहुत सारी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको याद कराऊंगा। अभी आपकी कितनी गलतियां हुई है वो आप देखना। शायद आपने गलती से लिख दिया होगा 57 प्राइम है, नहीं है यहाँ, आपने लिखा होगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये नहीं आया 93 का 57 होता है। अगर ये दिमाग में आता तो आप नहीं लिखते। 3 and 19 आर ऑल्सो फैक्टर्स। आपने कभी 87 लिख दिया होगा, 29 3 का 87 होता है, तो प्राइम नहीं है। आपने लिख दिया होगा, शायद 93 लिख दिया होगा। तो इसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि जो चीज फंसी हुई है दिमाग में, 91 एज ए प्राइम रजिस्टर्ड है, 57 एज ए प्राइम रजिस्टर्ड, वो निकालने में टाइम लगेगा। एक बार देख लोगे तो नहीं निकलेगा, बार बार रिवाइज करना। 3 दिन बाद वापस ये वीडियो देखना फाइंड करके। जब भी फ्री बैठे हो, कहीं पे भी सिग्नल पे हो, तो भी आप देख लेते हो प्राइम नंबर्स कौन से, राइट। बहुत सारी चीजें, कम से कम 4 5 6 सेशन लगेंगे आपका फंडामेंटल्स। मैं इसको कोई भी टॉपिक का नाम नहीं दे रहा, बहुत सारे 40 टॉपिक्स है मैथ्स के, बट हम कोई भी टॉपिक शुरू करें उसके पहले सारा फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्राइम्स नंबर की भी जरूरत पड़ सकती है, डिविजिबिलिटी रूल्स की भी जरूरत पड़ सकती है, डिवीजन थियरम की भी जरूरत पड़ सकती है। कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं निकलेगा आपको
कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े, बोर्डमैस रूल पे भी आपका कमांड होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स पे भी आपका कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करें, कॉन्फिडेंटली करें। कई बार अपने किए पे ही भरोसा नहीं होता तो बार बार चेक करते हैं। एग्जाम में क्या होता है, एक तो 1 मिनट में आंसर देना होता है, 2 मिनट में आंसर आपको मैक्सिमम कर देना होता है। मल्टीप्लिकेशन किया, भरोसा नहीं है अपने आप, दूसरी बार करोगे अलग आंसर आएगा, अब और टेंशन, पहले किया वो सही था, बाद में किया वो सही है, तीसरी बार करोगे फंसोगे। तो मेक योर बेसिक्स, फंडामेंटल्स, कैलकुलेशंस वेरी स्ट्रॉन्ग। हमको आज तकलीफ इसीलिए हो रही है कि काफी सालों से आपने शायद पेन पेपर नहीं लिया होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं किया होगा। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास कैलसी है, हमारे पास लैपटॉप है, तो हम करते रहते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती, हम दिमाग को कष्ट ही नहीं देते। तो प्लीज नेक्स्ट एपिसोड में हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x2, 3x3, 3x2, और उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल टॉनिक फॉर योर माइंड, राइट। सो आज बेसिक नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स, प्राइम नंबर्स पे मैं ये सेशन एंड करता हूं। वेट फॉर माय नेक्स्ट सेशन, विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स। उसमें मैं सिखाऊंगा 2-3 टेक्निक, उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। दैट विल हेल्प यू टू डेवलप द फर्टिलिटी ऑफ योर माइंड, राइट। सो आई एंड दिस सेशन विद दिस प्राइम नंबर्स। मीनवाइल जब भी टाइम मिले 1 to 30 तक के स्क्वायर्स, 1 to 10 तक के क्यूब्स बाय हार्ट कर लेना, ठीक है। आई विल पोस्ट दैट पैम्पलेट ऑल्सो इन द वीडियो, और यू कैन यूज एनीवेयर, get the details from anywhere, and please squares and cubes, right? So I end this video, enjoy this session and wait for the next episode. Thank you.